Hello everyone, let's continue with compiler design. So here in this lecture we'll discuss about the symbol table. So here it is table, symbol table. So what is symbol table? Symbol table, it is an important data structure. It is an important data structure, right? Symbol table is what? It is an important data structure and maintained by compiler compiler to store information about the to store information to store information about the occurrences of various entities, store information about occurrences of various entities, various entities, right? Occurrences of various entities such as variable name, function name, object class, object class, interface, extra. Okay, so symbol table is what? Symbol table is a table that is an important data structure, right? So here it is important data structure and compiler maintained by the compiler to store the information about occurrences of various entities, right? So various entities की occurrences को information को क्या करना है, स्टोर करना है, उसके पर्पज से इसका यूज होता है. Occurrences such as that is variable name, right? So we'll store the entities like variable name, function name, object class, interface, right? Such type things will be there inside the that symbol table. Okay, next point you can note down that the information information is collected by the analysis of analysis of fetches of compiler collected by analysis of fetches of compiler to generate the okay fetches of compiler and and used used by the synthesis phase to generate target code.
right, to generate the target code. So क्या होगा, the information that is collected by the collected by the analysis of phases of the compiler, means compiler के phases को analyze करके information क्या की जाएगी, collect की जाएगी, and it is used by the synthesis phase to generate the target code. तो target code generate करने के लिए इनको क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा. Next thing, the uses of symbol table, the uses of symbol table. ओके, एक बार के लिए यूजेस को हटाते हैं, तो इसके बारे में कुछ और बात करते हैं. हाँ, एक एग्जांपल देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होता है सिंबल टेबल का. तो एग्जांपल की बात करें तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट रहेगा. So there will be the name, type, size, dimension, line of code, it is a line of declaration, line of declaration, line of uses, right, line of uses, address, and extra such type things will be there. ठीक है, तो सिंबल टेबल में क्या होंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगे और उनके रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशंस फिलअप होगी. राइट, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं. राइट, ओके. सो ये जो हमने लिखे हैं इनको क्या बोला जाता है, दीज आर नोन एज एट्रीब्यूट्स. तो ये सब क्या है, दीज आर नोन एज एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल. ये रहेंगे हमारे एट्रीब्यूट्स. राइट, और यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे. ओके, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, एंड we can say each entry in symbol table, each entry in symbol table in symbol table is associated with, that is associated with that is associated with attributes, associated with attributes, associated with attributes that support compiler and different phases. Okay, that support compiler in the different phases. Another thing, all attributes of the symbol table are not fixed in size.
all attributes are not in fixed all attributes are not in fixed size. ओके, सो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट्स चल रहे हैं. इट मे बी दैट थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट इसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा व्हेन विल डिस्कस अबाउट द लेक्सिकल दैट एनालाइजर. वहाँ पे टोकन्स काउंट करेंगे, राइट. और उसके बाद भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा. तो उसके बाद इतना ऐसे नहीं लगेगा कि थ्योरेटिकल्स हो रहा है, राइट. तो ये वाला टॉपिक्स थोड़ा थ्योरेटिकल सा है, एंड ये जस्ट फिनिश होने वाला है अभी. Okay, so is it clear till this part? तो मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की है इसके बारे में, सिंबल टेबल के बारे में. बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है. क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, वो आगे वाले पोर्शन से स्टार्ट होगा. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द लिमिटेशन ऑफ फिक्सिंग द साइज ऑफ सिंबल टेबल. लिमिटेशन ऑफ फिक्सिंग the size, fixing the size of symbol table. Fixing the size of symbol table. Okay, so one thing, if size is small, if size is small, then what will happen? We cannot store the more variable. ठीक है, तो साइज क्या कर दिया जाए, अगर स्मॉल कर दिया जाए तो क्या होगा, वी कैन नॉट स्टोर मोर नंबर ऑफ वेरिएबल, मोर वेरिएबल. अनदर थिंग, अगर साइज को क्या कर दिया जाए, लार्ज कर दिया जाए, if its size is large, then what will happen, then lots of space is wasted, right. So here lots of space is wasted. तो स्पेस क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि फिक्स्ड साइज नहीं होता वेरिएबल का. तो किसी का साइज क्या हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, किसी का क्या हो सकता है, दैट कैन बी द लार्ज. So finally what we can say, so it should be, so it should be dynamic in nature, right. It should be dynamic. ठीक है, डायनेमिक नेचर में होनी चाहिए, because which will allow increase or decrease the size at the compile time, right. Which will allow increase, which will allow increase or decrease the size at a compile time, right. So this is what the little story about the symbol table. ठीक है, तो ये क्या रहेगा, सिंबल टेबल. So now we'll discuss about the lexical analyzer.
So this topic is important. Sometimes they ask that how many tokens are there in the program. ठीक है? So this topic is important. Lexical analyzer. Lexical analyzer. So lexical analyzer is the first phase. It is the first phase of compiler, right? ये क्या रहेगा? That is the first phase of the compiler, and it divide the program into meaningful string. Divide the divide the given program meaningful into meaningful strings, right? Into the meaningful strings, which are known as token, which are known as which are known as token which are known as tokens. तो जिनको क्या बोला जाता है? टोकन. लेट्स सी once again. So lexical analyzer, तो इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर. कंपाइलर का क्या है? ये पहला फेज होता है, ऑलरेडी वी नो. एंड इट विल डिवाइड द प्रोग्राम इनटू मीनिंगफुल स्ट्रिंग्स विच आर नोन एज टोकन्स. तो ये प्रोग्राम को क्या करता है? मीनिंगफुल स्ट्रिंग्स में डिवाइड करता है, और जिनको क्या बोला जाता है? जिनको बोला जाता है टोकन्स, राइट? सो दैट आर नोन एज tokens. Then what are the functionalities of lexical analyzer? So function of lexical analyzer. So first one we can say divide the program into token. Dividing program into tokens, right? Dividing the program into tokens. Second thing, it will remove the comments. It will remove comments. Third thing, it will remove the white spaces. Okay, it will remove the white spaces, meant it will remove the blank space. And next, it will giving the error message. Giving error message by providing line number. By providing line number. And it will scan line by line, राइट? एक एक लाइन की क्या की जाएगी? स्कैनिंग की जाएगी. इट विल स्कैन line by line. Okay, so is it clear till this part?
Okay, okay. Now let's see the program and find out the tokens, count the number of tokens. Okay, fine. So let's see the example and count the number of tokens. So here it is a int max x comma y comma y. Okay, x comma y, then int x comma y int x comma y semicolon then star find max of x and y, max of x and find max of x and y, then return return x greater than y, then here it is conditional operator, it is x then y semicolon. Okay, so assume this is the program given and don't bother about what is the meaning of this program and all. Okay, so simply here this is the program given. Now we need to count the tokens here. What are the tokens? Okay, so let's see what are the tokens. One thing, this integer is a token, then max is again a token. Okay, so now this starting bracket, that is also a token, x is a token, that comma is a token, y is again a token, closing bracket, that is token, then integer is a token, then x is a token, comma is a token, y again token, semicolon is a token. After that there is a comment given, so here comment is not a token, it will ignore this comment, right? Here it is not a token, right? It will not count comment as a token. Next, starting braces, it is a token. Again, return is a token, starting bracket, that is token, x is a token, greater, that one is a token, y is a token, conditional operator, that is a token, x is a token, that क्या बोलते हैं सेमी कॉलन, दैट फुल कॉलन, कॉलन वी कैन से, हाँ, कॉलन इज ए token. Again y is a token, and here it is that closing braces, that is a token, and this semicolon also a token, and here parenthesis, this closing braces, that is also a token. ठीक है, तो ये भी क्या है, एक टोकन है. Now we'll count the number of tokens. So number of token, it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
and 25. So total number of tokens that are number of tokens that is equal to 25. Okay, so here total number of tokens are 25. Now tell me, it is clear or not? Total number of tokens. ओके, सो हम लगभग 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा क्या क्या टोकन्स होते हैं और क्या टोकन्स नहीं होते हैं, राइट। तो ऐसे ही एग्जाम में क्या करेगा, एक प्रोग्राम देगा और पूछेगा काउंट द नंबर ऑफ टोकन्स, राइट। so you can count like this one. Now let's see the next program and count the tokens. So here it is printf, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया printf, then double quote start hello, right, then assume %d, then double quotes comma, double quotes, then comma, after that here it is a comma, ampersand of a comma, double ampersand, and that is nothing but we can say logical and, or double ampersand, then a, then comma, then star 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 a, then semicolon. Okay, then semicolon. This is the program given. Okay, then try to find out the number of tokens. How many tokens will be there? Try to find out the tokens. Okay, tokens are 21. Yeah, that might be right. 22, that might be right. And maybe wrong also. 18, yeah, it's nearby. Let's see how many tokens will be there. First thing, printf is a token. That starting bracket, that is token. Okay. After that, from this double quotes to this double quote, here this is what a single token, राइट। तो ये यहाँ डबल कोट से लेके इस डबल कोट्स तक ये क्या रहेगा, दैट विल बी द सिंगल टोकन, राइट। हियर इट इज ए सिंगल टोकन। आफ्टर दैट इट इज कोमा, दैट इज ए टोकन, राइट। आफ्टर दैट a is a token, comma is a token, right, ampersand is a token, a is a token, comma is a token. After that, here it is a not a single ampersand, here it is and again and, that means logical and, right.
again a token, a is a token, comma is a token, right? So this star is a token, again star is a token, a is a token, then closing bracket, that is a token, and semicolon is also a token. Now we can count, right? So if we count this one, how many tokens are there? It is 1, 2, here it is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17. So finally total number of tokens, so here number of tokens that are 17. Okay, so total number of tokens are 17. So is it clear to all? Clear? Okay, okay, fine. So let's see the next example and try to find out the number of tokens. ओके, इस सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यू रिकनेक्ट एंड इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस अबाउट दिस.